अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग ड्रम स्टिक्स फ्राई करके दिखाएंगे, वो भी एक बहुत आसान तरीके में, लेकिन मज़ेदार रेसिपी है। इसके साथ साथ हम लोग पुलाव राइस भी नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग एक आसान तरीके में नवाब्स किचन के स्टाइल में ड्रम स्टिक्स कैसे फ्राई करते हैं। आज हम लोग एक सिंपल वे में ड्रम स्टिक्स फ्राई करके दिखाएंगे। उसके लिए पहले हम लोग पानी लिए हैं, इसी में सॉल्ट ऐड करेंगे। इसी सॉल्ट वाटर में हम लोग ड्रम स्टिक्स को थोड़ा सा काट के उसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो सके। ड्रम स्टिक्स हम लोग पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए फर्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करे बाद हम लोग इसमें गरम मसाला, उसके साथ साथ टेस्ट के लिए थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे मसालों के साथ साथ हम लोग इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी में लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करते ही हम लोग इसमें कर्ड भी ऐड करेंगे। दही के बाद हम लोग इसमें एग्स भी ऐड करेंगे। इन सारे मसाले लेग पीसेस को, ड्रम स्टिक्स को अच्छी तरह अप्लाई हो गए बाद हम लोग 1 आवर तक लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। 1 आवर तक अच्छी तरह मैरिनेटेड हुई है। इसी ड्रम स्टिक्स में हम लोग फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मेथी भी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी। इसी ड्रम स्टिक्स में अच्छा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके साथ साथ अच्छा सा सॉफ्टनेस लाने के लिए ऑल पर्पस फ्लोर मैदा ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसको ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
आज हम लोग 200 ड्रम स्टिक्स वो भी बहुत मज़ेदार बनाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग पुलाव राइस भी प्रिपेयर करे हैं। नीडी पीपल को हम लोग इमीडिएटली पैक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ये वीडियो देखते ही आप भी अपने घर पे ड्रमस्टिक्स फ्राई करिए और इसके मज़ा चखिए।
आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नवाब्स किचन फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना मत भूलिए और ज़रूर लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।